So we were started about our drug acting on cardiovascular system. So out of that we have seen cardiovascular system from anatomy physiology point of view. Then we have started our anti-arrhythmic drugs. We have already seen two parts of this anti-arrhythmic drug. So what we have seen? We have seen the introduction. What do you mean by cardiac arrhythmia? What an anti-arrhythmic drug will do? What do you mean by fibrillations? What do you mean by flutter? What do you mean by defibrillatory agent? Defibrillatory agents. So we have seen the cardiac action potential, how action potential is generated. What is phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. We have already seen this. After that I have already explained you this about. So what happens in the phase 0? So there is a phase 0 is known as a rapid depolarization. So here there is a entry of sodium through past sodium ion channels and there is a depolarization. When there is a threshold potential is reached, you know that intercellular negativity and positivity I have already told you. If anybody is not getting that, just go and see the previous videos. For that we have also seen important terms, automaticity and all that. After that we have seen the types of arrhythmia. After that, what are the types of arrhythmia we have? After that we have seen these important definitions of different type of arrhythmias. Okay. After that we have seen the classification. So remember, class 1 drugs they will act on a phase 0. Class 1 drug they will act on a phase 0. Class 2 drugs, okay, class 2 drug they are known as a they are known as a they are known as a beta blockers, and they will also act on a this phase. Class 2 drug will act on a phase 3. Class 3 drug also will act on a phase 3, and class 4 drug they will act on a phase 1 and 2. Class 1 drug को बोलते हैं अपन सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. They will block the entry of sodium ion inside the cardiac cell, prevent the zero phase of depolarization. Will not prevent, but let me correct myself. They will they will slow down the phase 0 of depolarization. जो phase 0 होता है वो slow करते हैं class 1 drug. उसमें चार टाइप का आता है, class 1A, class 1B, class 1C, है ना. क्लास 1B ए मतलब मॉडरेट सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर, क्लास 1B मतलब वीक सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर, क्लास 1C मतलब स्ट्रॉन्ग सोडियम आयन चैनल ब्लॉकर्स. उसके एग्जांपल्स इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए. सो जस्ट रिमेंबर, sodium channel blockers they will act on a phase 0 of action potential, cardiac action potential. Class 2 drugs they will act on a class 2 drug they will act on a phase 3. Class 2 drugs they are known as beta blockers, they will act on a phase 3 of cardiac action potential. Phase 3 of cardiac action potential. Class 3 drugs they will act on a same. Class 4 drug they will act on a phase 1 and phase 2. Because class 4 drug they are known as calcium channel blockers, and in that variability as in all these are. We have already seen this. We have seen the classification of anti-arrhythmic drug 2-3 times. If you are not getting, you please go to the previous videos. Okay. Anti-arrhythmic drug we have seen the classification 2-3 times. And we have also seen this. So what class 1 drugs will do? Class 1A drug, what will they do? Class 1B drug, what will they do? Class 1C drug, what will they do? In the last session. In the last session, we have seen the quinidine and its pharmacological actions as a prototype for class 1 drugs. Okay, class 1 drug का prototype होता है आपका quinidine. Quinidine is nothing but the alkaloid obtained from cinchona. Quinidine. Okay, so quinine and quinidine they are the stereoisomers of each other. उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Quinidine is a D isomer. Quinidine is a D isomer of quinine. Remember, okay. As quinidine, it is a sodium channel blocker. It also block the acetylcholine receptor. So it is a vagolytic also. It is also having membrane stabilizing effect on the heart muscles, and also it is a skeletal muscle relaxant. So both are actions होते हैं, we have already seen. So remember, every drug used in the arrhythmia, जो भी arrhythmia में drug use करते हैं वो क्या करता है? Every antiarrhythmic drug will decrease the automaticity, will decrease the excitability of cardiac cell, will decrease the conduction velocity. Conduction velocity में तो क्या होता है? Rate of impulse conduction. Impulse जनरेट कहाँ पे होता है? ऐसे नोड के, ऐसे नोड, वहां से ट्रैवल होके impulse एट्रियम में जाता है, वहां से एवी नोड में जाता है, राइट. तो एवी नोड से आपका बंडल ऑफ हीस में जाता है, वहां से पर्किंज फाइबर में जाता है, वहां से पूरा मायोकार्डियम को सप्लाई होता है. द रेट ऑफ
traveling of impulse or rate of conduction of impulse. That is also slow down. So they slow down the conduction velocity. They will increase the refractory period. So एक कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकंड का, उसमें आपका पूरा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन है ना, आर्टेरियल रिलैक्सेशन, पूरा आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन वो सब इवेंट होता है. सो ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वन कार्डियक इवेंट, एक कार्डियक साइकिल चल रहा है ना, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है ना, उसके बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद में रिलैक्स हो रहा है. तो एक कार्डियक इवेंट में 0.8 सेकंड में अगर दूसरा कोई स्टिमुलस आता है, तो ड्यूरिंग द वन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक सेल, इफ एनी अनदर स्टिमुलस इज देयर, दैट stimulus is useless because your cardiac cell will not answer that stimulus, will not react with that stimulus because already there is a action potential going on. एक जो action potential चल रहा है मतलब फेज 0 होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और बाद में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, बाद में जब स्टिमुलस आएगा तब फिर से फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ऐसा चलेगा. बट एक ही फेज चल रहा है, फेज 0 चल रहा है, 1 में आया और फिर नया स्टिमुलस आया, सो कार्डियक सेल विल नॉट रिएक्ट विद दैट. दैट इज नोन एज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड. Refractory period. This is the period in which cardiac cell will not react with the another stimulus, will not again depolarize during that stimulus. That is the resting period, refractory period. There are two types: absolute refractory period and relative refractory period. Absolute refractory period and relative refractory period. Absolute मतलब क्या? During this stimulus of any strength, if comes to cardiac cell will not react with that, will not respond to the stimulus. Known as the absolute refractory period. इसमें क्या है? इसमें सब चल रहा होता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. नाउ सेकंड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई ऑडिबल टू यू? दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो उसमें क्या होता है कि दैट इज अ लेट फेज ऑफ योर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. जब आपका फेज 3, फेज 4 चल रहा है ना, फेज 4 मतलब क्या? रीपोलराइजेशन. उस टाइम पे अगर कोई स्टिमुलस होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, so your cardiac cell can respond to that stimulus, and that is known as the relative refractory period. Okay? Relative refractory period. So there are two type of them. So all these anti-arrhythmic drug, they will decrease the automaticity of your heart muscle, excitability of heart muscle, conduction velocity to the conducting system, and they will increase the refractory period. Most of the drugs, they will increase the refractory period. They will decrease the automaticity, decrease the excitability, decrease the conduction velocity, and increase the refractory period. We have seen this. AV conduction also decreases. Okay? These are the actions of your all anti-arrhythmic. We have seen the quinidine. Okay, so we have seen quinidine in the detail. Adverse reactions also we have finished in the last lecture. So in the last lecture also we have seen procainamide, disopyramide. Okay, their mechanism, their action, lidocaine, etc. So remember lidocaine, lignocaine. Lidocaine is also known as a lignocaine. It is a local anesthetic, and it is the very important drug in the cardiac arrhythmia. It is the okay, first choice of drug treating the different types of arrhythmia, ventricular arrhythmia of many origins. Drug of choice in the emergency termination of ventricular tachycardia. Popular antiarrhythmic drug in the ICU. Okay. Drug of choice in the digitalis induced ventricular arrhythmia. We have seen this. So we have also seen phenytoin, flecainide, propapanone in the last session. Now this was the last slide. Okay. Now session will start from this slide today. So second class 2 drugs. Class 2 drugs used in the arrhythmia, they are known as a beta blockers. So first drugs or first class first drug used in the arrhythmia, they are known as a sodium channel blockers. तो को याद रखने का तरीका भी सिंपल है. पहले सोडियम को ब्लॉक करो, फिर बीटा को ब्लॉक करो, फिर पोटेशियम को ब्लॉक करो, है ना, फिर कैल्शियम को ब्लॉक करो, पोटेशियम को ओपन करो. पहले ब्लॉक करो और बाद में ओपन करो. तो पहले ब्लॉक सीरियली करो, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स, देन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, लास्टली पोटेशियम चैनल ओपनर्स, है ना. हो गया एंटी-अरिथमिक ड्रग क्लासिफिकेशन. इसी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन है. ऑब्वियसली क्लास 1 में आपको सब टाइप है, क्लास 1 ए, क्लास 1 बी, क्लास 1 सी. कि एंटी-अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन मैंने 3 बार लिया है. उसका रीजन वही है कि क्लासिफिकेशन जो है एंटी-अरिथमिक ड्रग का इतना इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लासिफिकेशन को. सो नाउ बीटा ब्लॉकर्स.
So these beta blockers, they are known as a class second drug used in the arrhythmia, and these beta blockers we are going to see in the details when we'll see drug used in the hypertension, because उनका ज़्यादा use hypertension में होता है. What do you mean by beta blockers? They will block the beta receptor of noradrenaline. Basically, they are the adrenergic beta receptor blockers. So you know that beta 1 receptor is present in the heart. Okay? So stimulation of beta 1 receptor by noradrenaline. So what will happen? So it will increase the force of contraction. It will increase the heart rate. It will increase the blood pressure. Okay? Few arrhythmias. Okay? Few arrhythmias. For example, if you are under tremendous stress, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, या फिर आप घबरा गए, so ओवर फियर हो गया आपको, कभी कभी क्या होता है आपका जोर जोर से दिल धड़कता है, टेंशन बिकॉज ऑफ द myocardial infarction and after myocardial infarction, post myocardial infarction arrhythmia is also, then arrhythmia due to exercise, arrhythmia due to stress, tension. So mostly arrhythmia due to use of local anesthetics, so they are treated by beta blockers. Okay, stimulation of beta 1 receptor by noradrenaline in the myocardium increases the automaticity. Okay, increases the automaticity, leads to increase the automaticity and increases the atrioventricular conduction and shortening the refractory period. Means refractory period डिक्रीज होता है ना. बीटा वन स्टिमुलेशन होगा नॉर एड्रेनलिन की तरफ से, क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मीन्स ऑटोमेटिसिटी बढ़ता है हार्ट का, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ता है. ठीक है, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, दैट इज डिक्रीज्ड. सो शॉर्टनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. Therefore बीटा ब्लॉकर्स, सो व्हाट दे विल डू, बीटा ब्लॉकर्स अगर यूज करें तो क्या करेगा वो, बीटा ब्लॉकर्स विल डिक्रीज द ऑटोमेटिसिटी, विल डिक्रीज द एवी कंडक्शन, विल इंक्रीज द रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो वही तो सब कुछ कर रहे हैं, सभी लोग वही कर रहे हैं एंटी एरिथमिक. दे आर यूजफुल इन द अरिथमिया, राइट, दे आर यूजफुल इन द अरिथमिया. सो व्हाट दे डू, they block the activation of, they block the activation of SA node and ectopic foci as a result of beta adrenergic blocking. Okay, so what beta blockers will do, they will block the activation of SA node. SA node का काम क्या है, to generate the impulse. And ectopic foci, ectopic foci, these are nothing but the other cells which are having, which started the making impulse. तो हार्ट में जो बाकी एट्रियम होता है, कंडक्शन सिस्टम होता है, पूरे जो मसल है हार्ट के, they has a capacity, they can develop an impulse, but most of the time impulse, they also develop impulse, but the frequency of impulse formation is highest at a SA node. Now if due to myocardial ischemia, due to myocardial hypoxia, अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया हार्ट में, या फिर ब्लड नहीं जा रहा हार्ट में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है ना, या फिर कोई टिश्यू डैमेज हो गया, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, बचपन से ही कोई डिफेक्ट है हार्ट में, तो ड्यू टू दैट another cells of your heart, they start making their own impulse known as ectopic foci. इसको बोलते हैं ectopic foci. जैसे मैंने एग्जांपल बोला था कि कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, तो भगवान कौन है, हार्ट का ऐसे नोड है, लेकिन क्या है कि बाकी के सेल जो है उनको भी कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो खुद के इम्पल्स बनाना चालू करते हैं. तो वो इम्पल्स जो नॉर्मली ऐसे नोड बनता है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन कराता है हार्ट का. अभी ये बाकी सेल ने अगर इम्पल्स जनरेट किया, तो that impulse result in the extra systole, extra heartbeat, that is nothing but the arrhythmia. So these beta blockers, they will suppress the ectopic foci as a result of beta stimulation. Okay, now prolonged refractiveness, they will prolong or they will increase the refractory period, AV node, and they will slow down the ventricular rate. So lastly they will, okay, ultimately what they are doing, they are slowing the ऐसे नोड इम्पल्स फॉर्मेशन, दे आर ऐसे नोड का इम्पल्स फॉर्मेशन कम कर रहे हैं, जो आपका इक्टोपिक फोका है उसका इम्पल्स सप्रेस कर रहे हैं, उसके बाद में जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसको बढ़ा रहे हैं, एंड दे विल डिक्रीज द वेंट्रिकुलर रेट. दे आर यूजफुल इन द, mostly they are useful in the ventricular tachycardia. They also has a membrane stabilizing effect, mostly propranolol and oxyprenolol. Propranolol and oxyprenolol, they are having membrane stabilizing effect.
they are much safe than class 1 drug. ये थोड़ा सा safe होता है. Class 1 drug they are not much safe because they have a lot of every antiarrhythmic drug will produce arrhythmia. ठीक है, arrhythmia की antiarrhythmic drug ही arrhythmia भी produce करते हैं as we have seen in the very first class. So most of them they increase the QT interval in the ECG. That means they produce the torsade type of arrhythmia. Torsade type of torsade मतलब क्या है? Torsade it is a term from foreign language. That means without point. ऐसा कोई point नहीं मिलेगा आपको. So zigzag type of वहाँ पे ECG मिलता है आपको. It's rapid. Now पहला ड्रग है बीटा ब्लॉकर में, that is a propranolol. So propranolol is nothing but the L-propranolol, right? So propranolol is a racemic mixture, remember, okay? And its active metabolite is known as a 4-hydroxypropranolol. उसका active metabolite है 4-hydroxypropranolol. When we will see drug used in the treatment of hypertension, at that time we will see in the detail. But here only use of beta blocker in context with your arrhythmia. So what will they do? बीटा ब्लॉकर्स एंटागोनाइजेस द टैकीअरिथमिया मतलब जो हार्ट रेट बढ़ा है उसका एंटागोनाइज करता है. बीटा ब्लॉकर्स विल एंटागोनाइज द टैकीअरिथमिया व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक डिस्चार्ज which is produced or precipitated by sympathetic discharge. जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा है उसके कारण जो हार्ट रेट बढ़ा है उसके कारण जो अरिथमिया हुआ है वो precipitated by sympathetic discharge. So they will decrease or they will antagonize. Again, they will also antagonize the arrhythmia due to exercise or emotions or anesthesia. And they are used in the patient with the thyrotoxicosis. Patient में thyroid level बढ़ गया है ना, तो उनमें भी arrhythmia होता है. So mostly beta blockers they will antagonize the tachyarrhythmia produced by precipitated by sympathetic discharge or sympathetic discharge. Then during the or this arrhythmia produced by exercise or arrhythmia produced by excessive emotion. There excessive use of anesthesia, local anesthetic. There are also produces the arrhythmia and also arrhythmia due to thyrotoxicosis. Next, so propranolol is a non-selective beta blocker. ये अपन बाद में देखेंगे, but it is a non-selective beta blocker. Remember, non-selective beta blocker. Okay? Non-selective beta blocker. Now next होता है इसमें small. Small is a cardioselective beta blocker and it has a short duration of action. It is preferred over propranolol. ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा prefer किया जाता है because it is a selective. It will only act on a beta 1 receptor of your heart. Propranolol is a non-cardioselective. It will act on a beta 1 receptor of the heart as well as beta receptor present in the smooth muscles of your bronchus. तो देखो beta blocking is desired action in case of arrhythmia. Beta 1 receptor present in the heart that should be blocked. Okay, in case of arrhythmia, in case of hypertension, that is desired one. So whatever actions of propranolol they are beneficial but because of the blocking of beta 1 receptor in the heart. But as propranolol is a non-selective beta blocker, it क्या है? It is a non-selective beta blocker. propranolol क्या है? Non-selective है. तो non-selective मतलब क्या होता है कि ये beta 1 receptor कहाँ पे होता है? beta 1 ऑलरेडी अपन ने देखा, beta 1 is present in the heart. Beta 1 present in the heart, beta 2 present in the smooth muscles of bronchi, beta 3 is present in the your adipose tissue. Right? So non-selective means what? They will block all beta 1, beta 2, beta 3. So blocking of beta 1 is desired one. It is expected. It is required in case of hypertension, in case of arrhythmia. Okay, but blocking of beta 2 it is not required. It is not expected. अगर बीटा 1 को ब्लॉक किया तो एंटी आर्थमिक इफेक्ट मिलेगा आपको, बीटा 1 को ब्लॉक किया तो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलेगा आपको. दैट इज द डिजायर्ड वन इन केस ऑफ एरिथमिया, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन रिस्पेक्टिवली. बट अगर बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा वो तो क्या होगा? सो यू नो दैट बीटा 2 इज प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई रिस्पांसिबल फॉर द ब्रोंकोडाइलेशन. बीटा 2 स्टिमुलेंट यूज करते हैं. देखो उसमें साल्बिटामॉल, टर्पेटोलाइड, xanthine वगैरह जो ड्रग होते हैं दे आर यूज्ड इन द अस्थमा. अगर बीटा 2 को ब्लॉक किया इसने प्रोप्रानोलॉल में, अगर प्रोप्रानोलॉल बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो क्या होगा? अस्थमा होगा. सो इट विल प्रेसिपिटेट द अस्थमा. दैट्स व्हाई non-selective beta blockers are contraindicated in case of
अस्थमेटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट, उसका भी रीजन अपन वो बाद में देखेंगे हाइपरटेंशन वाला। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहा है आपको यहाँ पे? नेक्स्ट होता है सोटेलॉल। सोटेलॉल इज अ, इट इज एन अगेन बीटा ब्लॉकर, नॉन कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर with additional class 3 property, with additional potassium channel blocking activity. So beta blocker plus potassium channel blocker, so non-selective beta blocker. Okay, so it will increase the monophasic action potential in the atria and ventricle. Then means it is used in the atrial arrhythmia, atrial tachycardia, also used in the ventricular tachycardia. It will also increase the effective refractory period, or it will prolong the effective refractory period. So that's why ये terms समझना इतना important था उस टाइम पे, इसलिए वो पहले लिया है। अगर आपको मालूम नहीं what is action potential, what is a refractory period, what is a effective refractory period is also known as absolute refractory period. इसको अपन बोलते हैं absolute refractory, automaticity, excitability, contractility। ये टर्म्स अपन ने क्यों देखे, उसके रीजन ही वही है, पहले ये टर्म्स मालूम होना चाहिए तभी जाके आपको ये समझ में आए। So also it has a prominent class 3 action. It will prolong the repolarization by blocking the potassium ion channels. So sotalol is a non-cardioselective beta blocker plus it is a potassium channel blocker. It has an adverse effect of torsade day points. It can produce this torsade day points type of arrhythmia. So beta blockers. You can see over here. So जो beta blockers है, so particularly this sotalol, so diminution of phase, most of the beta blockers जो है वो सब किसके ऊपर एक्ट होते हैं? phase 4. So diminution of phase 4, depolarization, reduction of atomicity at a SA node, जो SA node का atomicity है वो कम कर देगा. That's why reduction in the heart rate. That's why also they also reduces the AV conduction, atrioventricular जो node होता है AV node, उसके ऊपर जो conduction है उसको भी slow कर देगा. Then that's benefits are due to the anti-catecholamine activity, blocking of noradrenaline receptor. So propranolol, oxyprenolol, atenolol, then esmolol, sotalol. These are the drugs used in the. Next आता है आपका other drugs. Okay, other drugs. So class, we have seen the class 1 drug, different classes 1 drug, class 2 drug. Okay, so class 3 drug, ibutylide. इसमें दो ड्रग आता है, ibutylide and dofetilide. Dofetilide, amidaron. Okay, amidaron is also there. So this is a class 3 drug. All these drugs are the class 3 drug. We have seen the classification. Other drug, class 3 drug. We have seen the class 1 drug, class 2 drug. Now it is a class 3 drug. So class 3 drugs are nothing but they are known as a potassium channel blocker. Okay, class 3 drug, potassium channel blocker. So ibutylide, dofetilide, then amidaron, drondaron. These are the drugs. Okay, amidaron and drondaron. So first ibutylide. So it is a class 3 drug. ये कौन सा है? class 3 drug. It will prolong the, मतलब ये increase कर देगा arterial plus ventricular refractory period. So as I told you, every antiarrhythmic drug वही करेगी, ठीक है? Conduction slow करेंगे, atomicity कम करेंगे, prolong करेंगे refractory period. So ibutylide will prolong the arterial plus ventricular refractory period and used in the atrial flutter and fibrillations. So atrial flutter and fibrillation. So flutter मतलब क्या? If heart is beating more than 200 to 50, okay, 150 to 250, known as a flutter. अगर हार्ट रेट आपका हार्ट बीट हो रहा है 150 से लेके 250 तक पर बीट्स, नॉर्मली ये कितना होना चाहिए? 72 बीट्स पर मिनट. So if your heart is beating more than 150 and around 250, less than 250, more than 150, so it is known as a flutter. And if it is more than 350, okay, more than 250 or 350 around, so it is known as a fibrillation. Okay, so class 3 drug used in the arterial flutter, arterial fibrillation. Okay, so it will increase the atrial as well as ventricular refractory period. Now उसके related drug होता है दूसरा dofetilide. Dofetilide is a similar drug which can be taken orally
Ibutylide is only antiarrhythmic drug which is currently approved for okay, acute conversion of atrial fibrillation into sinus rhythm. So only Ibutylide is the only approved drug. It is a class 3 drug approved by FDA. Approved by FDA for acute conversion of okay for acute conversion of atrial fibrillation. एट्रिया जोर जोर से धड़क रहा है उसको साइनस रिदम में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल रिदम लाने के लिए ये okay, नॉर्मल रिदम लाने के लिए ये अप्रूव्ड ड्रग डोपेटिलाइड इज अ सिमिलर ड्रग टू द इबुटिलाइड नेक्स्ट होता है पोटेशियम नॉर्मल पोटेशियम भी देते हैं so reduction potassium will cause reduction in the conduction velocity then prolongation of refractory period and reduction in the automaticity of your heart. They are the effect of potassium without causing hyperkalemia. So potassium be antiarrhythmic drug. So it will decrease the conduction velocity, prolongation of refractory period, and reduction in the automaticity of cardiac muscle without producing the hyperkalemia. Okay. Next drug होता है आपका amidaron. So amiodaron, then drondaron. Okay. So remember, important. It is only drug which is having iodine in the structure. So antiarrhythmic drug which is having iodine in the structure. So it has a iodine in the structure. तो iodine है तो क्या करेगा hyperthyroidism कर सकता है obviously hyperthyroidism कर सकता है so result in the hyperthyroidism it has a iodine in the structure it increases the iodine level in the body hyperthyroidism so it is a broad spectrum antiarrhythmic drug ये देखो यहाँ पे लिखा है wide spectrum antiarrhythmic amiodarone. So it is a potassium channel blocker as well as also block the sodium ions initial stage potassium channel blocker. Also it is a beta blocker non-selective beta blocker. Okay. That's why it has a wide spectrum of activity. अगर wide spectrum उसका use है wide spectrum adverse effect भी हो. So it decreases the SA node. Sinus मतलब SA node. Atrial and ventricular conduction. SA node, atrium, AV nodal function prolongs the effective refractory period. ये तो सब करते हैं. Then AV nodes and ventricles are nodes and ventricles and slow down the conduction at a AV node. ये क्या करेगा SA node का conduction SA node का impulse formation कम कर देगा. एट्रिया का जो ओवरबीटिंग हो रहा है वो कम कर देगा कंडक्शन वहां पे कम कर देगा साइनस एंड एट्रियल एवी कंडक्शन नोडल डिप्रेसेस द साइनस एट्रियल एंड एवी नोडल फंक्शन मतलब साइनस रिदम कम करेगा एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा एवी नोड का कंडक्शन कम करेगा prolongs the effective refractory period okay of AV node then ventricles and also slow down the conduction velocity at the AV node. So it has a wide spectrum of activity also and wide spectrum of adverse effects. So and it produces anorexia, nausea, abdominal pain, tremors, hallucination, peripheral neuropathy. याद रखना है. CNS, okay, peripheral neuropathy. It has a neurological toxicity. Okay, so it produces the blue skin. So blueness on the skin. Okay, also increases the level of AGPT, serum glutamate aminotransferase. Then again also causes the hypertension, AV block, hypersensitivity. It can produce pneumonitis, pulmonary fibrosis, very important adverse effect, pulmonary fibrosis. इसके दो तीन एडवर्स इफेक्ट याद होगा इंपॉर्टेंट कौन से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और न्यूरोटॉक्सिटी देन पल्मोनरी फाइब्रोसिस है ना देन कॉर्नियल डिपॉजिट्स मतलब ये आईज में कॉर्नियल उसकी इसमें डिपॉजिट करेगा अगेन इट विल प्रोड्यूस अ ब्लूनेस ऑन द स्किन also it is embryotoxic मतलब क्या it is a teratogenic it contains iodine and it can increase the hypothyroidism so only iodine containing drug भी उसके बाद में आया नया ड्रग ड्रोनडारोन तो इसमें आयोडीन नहीं है ड्रोनडारोन इज a drug without iodine आयोडीन सिर्फ अमीडारोन में so obviously ड्रोनडारोन will not have adverse effect of hyperthyroidism. It is also less effective as compared to amiodarone. So
अगर लेस इफेक्टिव है तो एडवर्स इफेक्ट भी उसके लेस ही होगी। वैसे ही आपको लॉजिक लगा के पढ़ना है। याद कैसे रखना है, अमीडारून इज अ क्लास 3 ड्रग, उसका रिलेटेड थर्ड ड्रग दूसरा ड्रग होता है ड्रोन डायरोन। तो अमीडारून एज आयोडीन दैट फाइट प्रोड्यूस हाइपोथायराइडिज्म, also produces the pulmonary fibrosis, peripheral neuropathy and ब्लू स्किन कॉर्नियल डिपॉजिट। तो वही एडोसिपिक ड्रोन डायरोन कराएंगे, बस क्या हाइपोथायराइडिज्म नहीं करेगा। इट इज द मोस्ट पोटेंट एंटी एरिथमिक ड्रग बट आल्सो टॉक्सिक। इट इज यूजफुल इन द प्रिवेंटिंग द एंड ट्रीटिंग बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर टैकियारिथमिया। याद रखना ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग है, कौन सा, एमिडारोन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग तो है, आल्सो हाईली लिपोफिलिक है, highly lipid soluble. Amiodarone is a highly lipid soluble as well as longest acting and iodine containing drug. ड्रोन जो है इट इज आयोडीन लेस, इसमें आयोडीन नहीं होता है, याद रखना। आर यू गेटिंग? नाउ यू कैन सी ओवर हियर द एक्शंस ऑफ दिस ड्रग। व्हाट विल दे डू? दे विल हैव एक्शंस ऑन, देखो कहाँ पे एक्शन होगा, फेज जीरो में क्या होता है, फेज जीरो में सोडियम है ना, फेज जीरो, ये होगा फेज वन, ये होगा फेज टू प्लस, ये होगा फेज थ्री, फेज थ्री मतलब नीचे आएगा फेज जीरो। सो जीरो में, फेज जीरो मतलब सोडियम चैनल एंट्री, फेज वन मतलब क्या, एग्जिट ऑफ सोडियम, क्लोज ऑफ फास्ट सोडियम चैनल एंड ओपनिंग ऑफ स्लो सोडियम एंड कैल्शियम चैनल है ना। फेज टू क्या है, इनबैलेंस बिटवीन एंट्री ऑफ कैल्शियम एंड एग्जिट ऑफ पोटेशियम। फेज थ्री क्या है, रीपोलराइजेशन। फेज फोर क्या है, फेज फोर मतलब अगेन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम। तो देखो पोटेशियम आयन का रोल मैक्सिमम कहाँ पे, सो यहाँ पे है पोटेशियम आयन का रोल मैक्सिमम। व्हाट इज रोल, फेज थ्री इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, whatever sodium has entered in the cardiac cell, whatever calcium has entered in the cardiac cell, that are removed, they are removed है ना। तो याद रखना है फॉर ईच, है ना, फॉर ईच थ्री सोडियम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, फॉर ईच थ्री सोडियम टू पोटेशियम्स। मतलब क्या, जो सोडियम अंदर का है वो बाहर निकलने के लिए, जब तीन सोडियम का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो उसके बदले में दो पोटेशियम का मॉलिक्यूल अंदर आएगा, है ना, बिकॉज पोटेशियम इज इंट्रासेलुलर कैटायन, वैसे कैल्शियम का भी रिमूव किया जाता है। तो फेज थ्री दैट इज द रिपोलेशन। तो दे विल ब्लॉक द पोटेशियम आयन एग्जिट, what they will do, they will block the potassium ion exit and they will prolong this। तो ये जो टाइम लगता है ना, ये prolong, ये टाइम prolong कर, तो increased action potential duration and refractory period for cardiac action, then they inhibit the sodium entry, also they block the sodium entry। मैंने बोला है ना ये सोडियम का भी एंट्री कम करता है, तो inhibit the sodium entry, that is a one property। यहाँ से यहाँ पे भी स्लो डाउन करेगा। एक्ट एज अ नॉन स्पेसिफिक बीटा एंटागोनिस्ट, ये बीटा ब्लॉकर भी है, तो फेज फोर में भी एक्ट होगा। ये इंक्रीजेस द क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल इंक्रीज करेगा, क्यू आर एस टी जो है आपका ना, उसका भी इंक्रीज कर देगा। इंक्रीजेस द क्यूटी इंटरवल as there is a increase in the action potential duration and refractory period, that is the actions of amiodarone। are you getting here or not? समझ रहे आपको यहाँ पे ना, आपको बाद में कंफ्यूज नहीं कि कौन सा ड्रग कहाँ पे एक्ट हो रहा है ना, याद रखना है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, फेज जीरो है ना, फेज वन टू एंड थ्री। फेज वन में, फेज जीरो में सोडियम चैनल ब्लॉकर, फेज वन और टू में कौन से एक्ट हो रहे हैं, फेज वन और टू में यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक्ट हो गई, फेज थ्री में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एक्ट हो गई, और बीटा ब्लॉकर्स भी यहाँ पे। Now next is nothing but the calcium channel blockers। Last class था calcium channel blockers, calcium channel blockers। उसमें आता है आपका वेरापामिल, calcium channel blockers में वेरापामिल आएगा आपका, then है ना वेरापामिल diltiazem आएगा। So these two drug verapamil diltiazem, they are known as the calcium channel blockers। So what they will do, they are known as the calcium channel blockers and they will prevent the entry of calcium during the phase, है ना, फेज टू जो हो रहा है, फेज जीरो, फेज वन एंड फेज टू, सो दे विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द फेज वन एंड फेज टू।
They will slow down the phase 1 and phase 2. Okay. They are the calcium channel blockers. They are the drug of choice for rapid conversion of atrial flutter and atrial fibrillation into the sinus rhythm. जो एट्रिया जो है आपका बहुत ज़्यादा बीट कर रहा है 150 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा 350 तक है ना. तो दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कन्वर्जन ऑफ आर्टेरियल फ्लटर arterial fibrillation into sinus rhythm. Sinus rhythm मतलब क्या normal artery. In case of paroxysmal supraventricular tachycardia, it is absolutely contraindicated in case of patient with the patient on the beta blocker. इसको बीटा ब्लॉकर का ट्रीटमेंट चलो है उसमें ये यूज नहीं करा है उसमें ये यूज नहीं करना है. तो verapamil means calcium channel blocker, DTSM also. They are absolutely contraindicated in case of beta blockers, patient on beta blockers, or patient is having treatment of kidney and disappointment. क्लास 1 ड्रग है ना, क्लास 1 ड्रग क्लास 2 ड्रग अगर वो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी तो ये इसमें यूज नहीं करना है. सिंपली याद रखना है verapamil they are contraindicated in case of class 1 and class 2 drug. Okay? In case of patient which is already on treatment of class 1 and class 2. Remember, it is a drug of choice in treatment of supraventricular tachycardia. Supraventricular tachycardia. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना. Paroxysmal supraventricular tachycardia is a different and simply a supraventricular tachycardia is a different. इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है एडिनोसिन. के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है वो देखेंगे. So verapamil calcium channel blocker they will slow down the phase 2 phase 2 of depolarization. Phase 2 of depolarization. Okay? They are used in the supraventricular tachycardia. Supraventricular मतलब they are used in the arterial fibrillation and arterial flutter. Supra मतलब superior. Supra मतलब क्या? Superior. Superior to ventricles. Ventricles के ऊपर क्या होता है? Auricles. Auricle मतलब artery. उसका arrhythmia क्या है? Atrial flutter and atrial fibrillation. So verapamil is used to convert rapidly. It is used to convert atrial fibrillation, atrial flutter into sinus. Drug of choice, okay, in case of supraventricular tachycardia. वही atrial flutter and atrial fibrillation. Contraindicated with the class 1 and class 2 drug, obviously, and it is also used for prophylaxis of paroxysmal supraventricular tachycardia. नेक्स्ट ड्रग आता है आपका एडिनोसिन. मोस्ट ऑफ द बुक्स देखो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है which of the following drugs are not considered under Vaughan-Williams classification. Vaughan-Williams classification में एडिनोसिन नहीं आता है, एडिनोसिन नहीं आता है, पोटेशियम नहीं आता है, ये वर्नाक्लांत नहीं आता है. ठीक है. नेक्स्ट ड्रग होता है एडिनोसिन. सो नेचुरली ये क्या है? नेचुरली ऑकरिंग प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है. एडेनोसिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन है ना. So they are the naturally occurring purine nucleotide which is released during the myocardial ischemia. जब myocardial मसल में आपका ऑक्सीजन कम जाता है तो ये वहाँ पे रिलीज होता है and has a potent vasodilator property. ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है. So adenosine is a natural purine nucleotide released upon myocardial ischemia and it has a vasodilating property. So it acts as a potassium channel opener. It is also acting as a potassium channel opener. Also block the inward calcium current. तो calcium channel को भी block करता है into the myocyte. It suppresses ये AC node का activity कम करता है, AV nodal conduction कम करता है. Suppress the AC node, suppress the AV conduction. It is also rapidly. It is used to convert है ना paroxysmal supraventricular tachycardia into. Okay. So it is used to rapidly terminate. It is used to rapidly terminate the paroxysmal supraventricular tachycardia and it is safe than verapamil. It is the shortest acting antiarrhythmic. इसका T आप होता है less than 2 minute. Less than 2 minute. 2 मिनट के अंदर ही अपना काम करके निकल जाए, बाद में कुछ बॉडी में बचेगा नहीं. Shortest acting antiarrhythmic and it is a drug of choice in the treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT). इसके ऊपर GPAT में भी क्वेश्चन आता जाता है. नेक्स्ट ड्रग होता है आपका वर्नाक्लांत. इट इज अ मल्टी चैनल ब्लॉकर. मतलब क्या है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है ना. बाद में आपका
बीटा को भी ब्लॉक करता है बहुत सारा। इंडिकेटेड इन द कन्वर्जन ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन इनटू नॉर्मल। नेक्स्ट होता है ब्रेटिलियम टोसाइलेट। ब्रेटिलियम टोसाइलेट क्या है? इट इज अ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर है ये, अपन इसमें भी देखेंगे व्हेन वी विल सी एंटीएपिडेसिटक, उसमें भी आएगा ब्रेटिलियम टोसाइलेट। इट इज अ एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर and also appears to have its direct action on a myocardium, mainly used to treat the ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. Drug used in the treatment of heart block। अगर हार्ट का ब्लॉक हो गया है उसमें कौन सा ड्रग यूज करेंगे? उसमें आता है आइसोप्रोपिनेलिन। व्हाट इज इट? इट इज अ सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ नॉरएड्रेनालिन। तो ये क्या करेगा? हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। So it will increase the heart rate and force of contraction in case of heart block. It is used in the treatment of advanced and secondary high-grade atrioventricular block. So इतने सारे drugs हैं आपके। So you can see the action mechanism for verapamil again. What verapamil is a calcium channel blocker. What will it do? It will block the calcium. Then what will happen? Slanting of upstroke in the action potential in the AV node. AV node का conduction जब होता है phase 3 में, वो उसका slanting करेगा। Prolong the refractory period in the AV node. Then it will also slow down the conductivity at the AV node, stopping or abolition of re-entry type of arrhythmia in the AV node. Next होता है आपका adenosine. What is adenosine? It will increase the refractory period, lengthening of it, slow down the conduction rate at the AV node. Then adenosine is an anti-arrhythmic action. Why? Because it slows down the conduction and also increases the length of refractory period. Drug of choice in the paroxysmal supraventricular tachycardia. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। It is a purine nucleotide, shortest acting, shortest मतलब less than 2 minutes. It is a drug of choice in the paroxysmal supraventricular tachycardia. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। अगर ऐसा पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ paroxysmal supraventricular tachycardia, अगर एडेनोसिन ऑप्शन में है तो उसको क्लिक करो, अगर नहीं है तो फिर वेराफामिल। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज मीन बाय वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। सो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है ना, एक टर्म आया था आपको वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। सो इट इज नोन एज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट इन द हार्ट कंडक्शन, है ना। आपको बर्थ आपका हार्ट का कंडक्शन में क्या होगा? डिफेक्ट रहेगा। नॉर्मल, व्हाट इज द नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ऑफ योर हार्ट? व्हाट इज दिस येलो पार्ट इज नोन एज एसए नोड। यहाँ पे क्या है आपका? एसए नोड, है ना, जस्ट बिलो द superior vena cava you have SA node. So what is the role? To generate the impulse, to transmit the impulse to atria। यहाँ से atrium में impulse जाएगा, तो यहाँ से atrium में impulse जाएगा, ठीक है। बाद में यहाँ से impulse कहाँ जाएगा? AV node में। यहाँ पे AV node है, ये येलो वाला पार्ट का है AV node। तो ओके, सो impulse generated in a SA node, ये SA node है। This one is a AV node, ये AV node, AV node, SA node, AV node। So SA node will generate the impulse, will transmit to the atria and will transmit to the AV node। AV node से impulse आएगा यहाँ से bundle of His, है ना, यहाँ पे bundle of His, उसमें लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर बंडल रहेंगे और वहाँ से impulse जाएगा आपका लेफ्ट एंड पर्किंज फाइबर से पूरे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में और पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वो क्या होगा? कॉन्टैक्ट होगा। ये हो गया नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम। पहले ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा, एट्रियम में ट्रांसफर करेगा, एवी नोड को ट्रांसफर करेगा, एवी नोड बंडल ऑफ हीस को, बाद में परपिंच फाइबर को और बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होंगे। ये हो गया आपके नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ऑफ योर हार्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इन द वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम? So whatever impulse generated by SA node, so that is carried to a, okay, that is carried to a, okay, that is carried to a atrium also and this AV node also, but so it is again, देखो यहाँ से फिर से क्या हो रहा है? Impulse is going to the this conducting pathway, ventricles, Purkinje fibers, and then again from this side also, again the impulse is re-entering into the अगेन कंडक्शन सिस्टम, है ना। नॉर्मली क्या होना चाहिए? यहाँ से इंपल्स जनरेट होके ऐसे नोड से एट्रियम में जाना चाहिए, एवी नोड में जाना चाहिए, एवी नोड से पर्किंज फाइबर में जाना चाहिए और आपको वेंट्रिकल कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ से स्टॉप होना चाहिए इंपल्स।
लेकिन वुल पार्किंसन सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि वही इम्पल्स आपको री एंटर कर रहा है इसमें कंडक्शन पाथवे में. दैट्स व्हाई re-entering of this impulse causes the arrhythmia, will cause the arrhythmia. Again, heart will beat more than 100 beats per minute. फुल पार्किंसन सिम्टम में क्या होता है कि हार्ट विल बीट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट ऑलवेज. तो इसमें क्या है, इसका हार्ट जो है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा धड़कता है. फुल पार्किंसन सिम्टम ये क्यों होता है? इट इज अ जेनेटिक डिसीज, कंडक्शन डिफेक्ट इन द हार्ट ड्यू टू जेनेटिक ओरिजिन, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट. ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? ये होता है वुल पार्किंसन सिंड्रोम. सो दिस विल एंड द drug used in the arrhythmia. Now if anybody has doubt in this they can ask. इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछो कि ऑलरेडी